this lecture, we are going to study center of gravity by using multiple integrals. So this is the definition of center of gravity. The center of gravity is the average location of the weight of an object. Now in this diagram, let x bar, y bar be the coordinates of the point of center of gravity. So here m is the mass of that object. Then x bar, the x coordinate will be given by formula summation xi mi divided by summation mi. आपने ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी देखा होगा. सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड एवरेज एक्स बार. ठीक. So now since we are dealing with continuous functions, तो हम लोग समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से. Therefore x bar will be given by integration x dm upon integration dm, and y bar will be given by integration y dm divided by integration dm. Where dm is the mass of the small portion of an object. Now there are three cases. Case number 1, to find center of gravity for the arc of an curve. Gravity for the arc of an curve. Now let y is equal to fx be the equation of arc. Let us plot that curve here. So this curve is y is equal to fx. Let rho be the density the arc at some point P. Some point P. As we know that mass is equal to density into arc length. So therefore dm is equal to rho ds. Then x bar will be given by integration. So we are going to replace dm with rho ds divided by, in denominator only rho ds will be there. And y bar is equal to integration y rho ds divided by rho ds. So this was case number 1. Now ds is the arc length of the curve. So
For ds, we are going to use same formulas which we have used in rectification. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करने वाले हो जो आपने रेक्टिफिकेशन में यूज किए थे. So if curve is y is equal to f of x, then ds will be square root 1 plus dy by dx bracket square dx. Okay. So similarly, if your curve is in parametric form where y is equal to f2 of t and x is equal to f1 of t, then we will use following formula. Okay, so this is the formula. Find ds. Next, if your equation is in polar form, r is equal to f of theta, then ds will be given by this formula. Okay. So now case number 2, let the object be a lamina. Now what is lamina? So suppose this circle is given. So this is arc. Okay. अगर आपने इसमें सर्कल का एरिया भी इंक्लूड कर दिया तो अब ये हो जाएगा लैमिना. ओके, सो यू कैन सी हियर हमने अब सर्कल का जो एरिया है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या हो गया लैमिना. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना. और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो लैमिना के लिए ही आने वाला है. सो दिस सेकंड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो हियर dm is equal to rho into dA. ओके, लास्ट केस में ds था, यहाँ पे है dA where A is area. ओके, सो नाउ x बार का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम dm को रिप्लेस करेंगे रो dA से. सो x इंटू रो इंटू dx dy. ओके, अब हमें पता है कि डबल इंटीग्रेशन में एरिया के लिए dA हो जाता है dx dy. ओके, सो सिमिलरली y बार का फॉर्मूला, so this is formula to find y bar. Now remember one thing, that dA is equal to double integration dx dy. That's why we have replaced dA with dx dy. तो अगर आपके एग्जाम्पल में डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगी. तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है ये फॉर्मूला है अगर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है. अपॉन dx dy. तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं व्हाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल. अब ये फॉर्मूला था कार्टेशियन फॉर्म में. सपोज अगर इक्वेशन पोलर फॉर्म में है तो हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन डबल इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग dx dy with r dr d theta and x with r cos theta and y with r sin theta. तो मैं x की जगह पे r cos theta लिखूंगा
और dx dy की जगह पे r dr d थीटा, r dr d थीटा। ओके, ठीक है। Now center of gravity of solid. So we have seen how to find center of gravity for lamina। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है। So suppose we have a three dimensional object, we will call it solid। तो इसके लिए अब हमारा जो dm है, mass of small portion will be given by rho density into dv। Again dv is the small portion of volume जो होगा dx dy dz। Okay, so we all know for volume we use triple integration। तो अब फॉर्मूला में डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ रिप्लेस होगा। यहाँ पे आएगा x और dm की जगह पे रो dx dy dz। रो dx dy dz। Now if rho is constant, again it will get cancelled from numerator and denominator। So in that case, x bar will be given by x dy dz, x dx dy dz upon triple integration dx dy dz। So now if equation is in spherical form, spherical coordinates, then we can convert x bar into spherical form। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा r cos phi sin थीटा से, y को रिप्लेस करना पड़ेगा r sin phi sin थीटा से, और z को r cos थीटा से। So yes, dx dy dz is equal to r square sin theta dr d theta d phi। So therefore x bar will become, अब बस इंटीग्रेशन में x की जगह पे x की वैल्यू लिखनी है r cos phi sin theta, dx dy dz will become r square sin theta dr d theta d phi। Here rho is density, now divided by rho r square sin theta dr d phi d theta। In same way we can find y bar and z bar। So just remember that dm is equal to rho into ds
dm is equal to rho into dA, and dm is equal to rho into dV. ds is arc length, dA is area of lamina, and dv is volume of solid. This will be given by dx dy dz. अब आपके एग्जाम में बस आपको लेमिना के क्वेश्चन मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2. तो अभी मैंने प्लॉट कर लिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x को. दिस कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x. नाउ टू प्लॉट लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2, हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे. So if x is equal to 0, y is equal to 2. So that point is here on y-axis. Now similarly, let us put y is equal to 0. Then we will get x is equal to 2. Okay. So मैंने डायग्राम में दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए और उसमें से पास होने वाली लाइन भी प्लॉट कर दी. Now I have to find the point of intersection of curve y square is equal to x and line. तो मैं x is equal to y square वैल्यू पुट करूंगा लाइन x plus y is equal to 2 में. So I will get this. अब मुझे इसको सॉल्व करना है y स्क्वायर प्लस y, और ये 2 इधर प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो -2 को आपको ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए -2 और सम आनी चाहिए +1. ओके. सो रूट्स आर -2 एंड 1. तो एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1, एक का है -2. और x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए put y is equal to -2 in equation number 1, you will get x. So y is equal to -2 and 1, and after substituting y is equal to -2, x is equal to 4, and y is equal to 1, x is equal to 1. Okay. Now let us write down the formula for x bar. So x bar is equal to x dx dy upon dx dy. Okay. So diagram is like this. Okay. अब हमारा जो लैमिना है, दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. अब उस रीजन पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली. अब मैं लिमिट्स फाइंड करूंगा. तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए देखना है आपको कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का जो लेफ्ट पार्ट है वो कहाँ पे टच कर रहा है. वो टच कर रहा है कर्व को. तो लोअर लिमिट होगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और उसका जो राइट मोस्ट पार्ट है वो टच कर रहा है लाइन को. लाइन पे x की वैल्यू है 2 minus y. Therefore, limits are from x is equal to y square to x is equal to 2 minus y. Okay. Now let us find limits for y. तो y की लिमिट्स होगी -2 to y is equal to 1. Okay. So now let us substitute limits. So inner integral की लिमिट्स होगी y square to 2 minus y
outer integral की -2 to 1. अब मैं दोनों इंटीग्रल्स को लिमिट दे देता हूँ फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर dx dy. So the integral which is at the numerator, we will denote it by n. So let us calculate the integral which is in numerator n. So it is equal to y square to 2 minus y x dx dy. Now आप लोग देख सकते हो कि जो इनर इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट्स है वो y की फंक्शन है, तो हमें पहले किसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x is x square by 2. Now let us substitute upper limit and lower limit. So integral will become, we have taken 1 half common, -2 to 1. Now put upper limit. So 2 minus y is the upper limit square minus, now put lower limit. So हमें x की जगह पे y square put करना था, उसका square था तो y to the power 4. Now this is equal to 1 half as it is, integral from -2 to 1. हम लोग स्क्वायर कर लेंगे ब्रैकेट का, 4 minus 4y plus y square minus y raised to 4 dy. इसे इंटीग्रेट करना है, 1 हाफ 4 का इंटीग्रेशन 4y, यहाँ पे y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 और y रेज टू 4 का इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस होना चाहिए यहाँ पे, माइनस y to the power 5 divided by 5, and limits are from -2 to 1. Now just put upper limit, lower limit, and you will get value of n. So अब मैं upper limit put करूँगा 1, minus, now I will substitute a lower limit, 4 into -2 is -8. आप लोग भी कैलकुलेशन करके देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो. तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू 1 half into the bracket. Now this 4 minus 2 is 2, -8 -8 -16, minus minus plus, so plus 16 plus 2, 18 plus 1 by 3 plus 8 by 3, so it will be 9 by 3. This, now this minus 1 by 5, I have taken minus common, so
Therefore, answer will be 7.2. आप लोग भी कैलकुलेशन करके देखो, देखो आपको सेम आंसर मिलता है या नहीं मिलता है. So I will call it 1 numerator. Now let us calculate denominator. Denominator का इंटीग्रल था डबल इंटीग्रल dx dy और लिमिट सेम है y स्क्वायर, सॉरी, yes, limits are from y square to 2 minus y. Okay, y square to 2 minus y minus 2 to 1. Now we have to solve this integral. So it is very easy to solve this integral. तो पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे. 1 का इंटीग्रेशन होगा x, उसको देनी है अपर लिमिट लोअर लिमिट. फ्रॉम -2 to 1 to -y, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट y स्क्वायर dy. अब 2 का इंटीग्रेशन 2y, माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस y स्क्वायर बाय 2 और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3. लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 1. Now just put upper limit and lower limit, you will get your answer. So it will be 9 divided by 2. So this is the value of denominator. तो x बार होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, which is equal to, numerator was 7.5, sorry 7.2 divided by 9 by 2, that is 7 by 2, 9 by 2 is 4.5. The answer is 8 by 5. Okay, so this is x bar. Now let us calculate the y coordinate y bar. So to find y bar will be given by double integral. So as the region of integration is same, because we are finding y bar for same lamina, तो लिमिट्स चेंज नहीं होगी, बस x dx dy की जगह पे y dx dy आ जाएगा. डिनोमिनेटर में सेम इंटीग्रल dx dy. तो अगर आप लोग आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में इंटीग्रल है वो सेम है जो हमारे x बार के कैलकुलेशन में था. तो इसके लिए मैं यहाँ पे d ही यूज कर रहा हूँ, बस न्यूमरेटर चेंज हो गया है इसलिए उसके लिए n डैश यूज कर रहा हूँ. और डिनोमिनेटर का आंसर हमने अभी फाइंड किया था, दैट वाज 8 by 5. सो वी हैव टू फाइंड ओनली n डैश, तो आपको भी n डैश फाइंड करना है. सो लेट अस फाइंड n डैश नाउ. n dash is equal to double integral y square to 2 minus y minus 2 to 1 y dx dy. सो हम लोग पहले x के साथ इंटीग्रेट करेंगे. सो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन विल बी x having limits y square to 2 minus y dy minus 2 to 1 y. Now put upper limit 2 minus y minus y square dy. So now multiplying this bracket by y, you will get 2y
minus y square, and then multiplying y square by y, you will get y cube. Limits are from -2 to 1 dy. Now integrate this. So answer will be 2y square by 2 minus integration of y square, y cube by 3, and integration of y cube is y to the power 4 divided by 4. And limits are from -2 to 1. -2 to 1. So now put upper limit and lower limit. Set upper limit. One minus 1 by 3 minus 1 by 4. And at lower limit, put y is equal to -2. Square of -2 is 4. So 8 by 3 minus 16 by 4. Okay. Now after doing calculation, we'll get this is equal to -9 by 4. So this is n dash. So now let us find y coordinate y bar. So y bar is equal to n dash upon d. So n dash is equal to -2.25 divided by d. D was, I think, 8 by 5. That is equal to, sorry, d is equal to 4.5. So y bar is equal to -0.5. So therefore, center of gravity is equal to x bar y bar. So x bar is equal to y bar is -0.5 and x bar is 1.6. Okay. So this example is from your problem set.